जी Assalamualaikum everyone. Welcome to the next episode of Pick Friends. We just watched New Zealand versus England और अब हम पाकिस्तान versus ऑस्ट्रेलिया की तैयारी कर रहे हैं. But before we begin with analysis and checking कि Rizwan और Shoaib Malik की क्या हालत है, I would like to recall what happened at the end of last episode. So last episode के end में उमर फारूक चीमा जो अभी यहाँ हमारे साथ बैठे हैं, he got very complacent and he asked me कि which side are you backing to beat tomorrow? ठीक है, and I described England as if it's a toxic ex and I दुआएं मांगी मैंने कि न्यूजीलैंड जीते, ठीक है, and I got bashed and bullied by Umar Farooq Chima. But here we are. I mean, I wasn't expecting Umar to show up. मतलब इंसान में थोड़ी सी कुछ शर्म आया हो तो आज की एपिसोड में ना आए. लेकिन मुस्तफीज, do you think कि Umar should have been here today या उसको कोई नदामत कोई शक्ल पे होनी चाहिए? ये तो मुतमईन नजर आ रहा है. मेरे ख्याल से बड़ा पैनल उमर चीमा का वो है, हमारे पैनल का हिस्सा है. वो गेम को उसी तरह एनालाइज करेंगे, अपकमिंग गेम को उसी तरह एनालाइज करेंगे. अच्छा, आई नोटिस ये भी माशाल्लाह पूरे सिकंदर बख्श के तज्जिए पे निकल आए हैं. वो मैच से पहले कुछ कह रहे होते, जब मैच खत्म होता है उसके बाद वो कहते हैं मैं भी यही कह रहा था, जो टीम बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग अच्छी करेगी वही जीतेगी. ठीक है, सो उमर, वी सैल्यूट यू फॉर कमिंग अप टुडे. आई मीन, इफ आई वर इन योर प्लेस आई वुडंट हैव बीन हियर. आई प्रोबब्ली वुड हैव ब्लॉक्ड माय नंबर, मेरा नंबर. लेकिन हियर वी आर. सो वुड यू लाइक टू से एनीथिंग बिफोर वी? सारे जिन्होंने कल की एपिसोड देखी थी उनको पता है कि क्या एनालिसिस किया था. मैंने कहा था कि एक टफ मैच होगा. जाहिर है मैंने इंग्लैंड को फेवरेट करार दिया था और इंग्लैंड फेवरेट थे ज्यादातर मैच के लिए. 15 ओवर तक दूसरी इनिंग्स के, मतलब 35 ओवर्स तक वो फेवरेट थे मैच के. तो मैंने उनको फेवरेट करार दिया था. लेकिन मैंने ये भी कहा था कि अगर न्यूजीलैंड चेज करता है, और ये मैंने और जोहा दोनों ने इस बात पे एम्फसाइज किया था कि अगर चेज करता है तो न्यूजीलैंड जीत सकता है, और क्योंकि कैलकुलेटेड साइड है वो चेज कर सकते हैं, और वही हुआ. I'm noticing how you're subtly trying कि जोहा तुम्हारा साथ दे इस मौके पर, लेकिन she has already congratulated me on this. But anyways, Zoha, what's your take on today's match? I mean, everyone thought when they needed 64 runs from 25 balls, लगा था England were gonna, they have one step in the final. लेकिन फिर वो जिमी नीशम स्टॉर्म आया, उसके बाद फिर डैरल मिचेल भी छक्कों की बरसात कर बैठे. So what's so special for you in this match? देखिए, पहले मैं कहना चाहूंगी देयर इज ह्यूमिलिटी इन ओनिंग अप टू योर मिस्टेक्स. हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने बोला था इफ चेस कर रहे हैं तो न्यूजीलैंड जीत सकता है. वी नेवर सेड वी आर सपोर्टिंग इंग्लैंड. एंड देखिए ऑल्सो 15 जो ओवर्स थे न्यूजीलैंड की इनिंग्स से, ऐसा लग रहा था वन साइडेड मैच है. तो वर वी रियली रॉन्ग. वो तो आखिरी 5 ओवर्स में नीशम और मिचेल खेल गए हैं तो खेल गए. और ऑल्सो नीशम से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी. वो हफीज की तो एक बॉल नहीं उसने खेली थी. यहाँ पे उसने बस तुक्के से शॉट टले, तुक्के नहीं थे. उसने बदला लिया है 2009 का, वही उसने सुपर ओवर खेला था आई थिंक. एंड ही जस्ट इवेंट इट. और अच्छा, इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दूं. नहीं, आज आप दुनिया के सारे टॉप एनालिस्ट को भी साथ, हम तो गलत प्रूव हुए हैं, ठीक है इंग्लैंड हार गया, हमने कहा था. दुनिया के सारे टॉप एनालिस्ट भी हमारे साथ ही गलत हुए जिन्होंने इंग्लैंड को इस टूर्नामेंट में फेवरेट्स करार दिया था. तो इफ यू आर वाचिंग सारे टॉप सारे क्रिकेट स्पेशलिस्ट देख रहे हो तो आप अपना अपॉलॉजी लेटर टू फाइज गिलानी एंड मुस्तफीज अहमद को देना, क्योंकि मुस्तफीज आल्सो बेन स्टोक्स बोले. किसको? बेन स्टोक्स ने सबसे पहले बोला था. बेन स्टोक्स को कौन सी लेता है? मतलब एक केविन पीटरसन भी तज्जिया करता है, वो फिर टिम पाइन भी लगा रहता है. वी डोंट लिसन टू सच पीपल. आई ओनली बिलीव इन क्रिक फ्रेंड्स पैनल. ओके, so वो बात है. And I'm noticing how Umar has made Zoha, has had negative effect on Zoha. I mean, वो bad influence हो रहा है Umar. So I would suggest Mustafiz, thank you for being yourself, and Mohit, I also respect you, even though आपने उस दिन गलत तज्जिए के बाद से आना छोड़ दिया. So moving on towards Pakistan's match tomorrow. So first off, I've got bad news. ये बहस खत्म होने से पहले मैं ऐड कर लूं प्लीज. हाँ यार, तुम्हें याद होगा जब ना न्यूजीलैंड इंडिया की गेम थी ना, मैं तो प्रेज किया अभी उसी चीज के ऊपर. हाँ, उससे पहले हम सारे बैठे थे एंड वी टॉक्ड अबाउट व्हिच टू टीम्स आर गोइंग टू प्रोग्रेस फ्रॉम आवर ग्रुप. और सबने इंडिया पाकिस्तान बोला था, मैंने न्यूजीलैंड पाकिस्तान बोला था.
और फिर मैंने आगे ये भी बोला था न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को निक अवे करना, एंड दे डिड दैट. ये बात बिल्कुल ठीक है. we praised you in yesterday's episode as well कि how it was everyone thought कि India बोला था, लेकिन मुस्तफीज ने साथ ये भी बोला था कि दूसरे ग्रुप से साउथ अफ्रीका आ रहा है. Yes, I accept that. वो मेरी prediction गलत थी. It went as Umar, as you can clearly see, you have to own I predicted that it went wrong. Mustafiz did that as well. Maybe you should do it as well. You know, it isn't that bad. Lekin coming back to the topic. So breaking news for all of our viewers and our panelists as well. I'm pretty sure तुम लोगों को अब तक तो पता चल गया होगा. लेकिन शोएब मलिक और माशाल्लाह से मोहम्मद रिजवान को फ्लू हो गया और साथ बुखार भी हो गया है. शोएब मलिक का तो प्रीटी श्योर बेचारे को नजर लग गई. कल उसने फेसबुक पे पोस्ट डाली थी अपनी फोटो शूट की, उसके बाद सादा पाकिस्तान ने उसको नजरें लगा दी हैं. ठीक है, लेकिन ओवरऑल आई एम वेरी स्केर्ड फॉर टुमारो. डू वी थ्रो इन द यंग हैदर अली एंड सरफराज अहमद? Honestly, massive respect for Sarfaraz, but he's going to be a major downgrade at this moment. So Soha, what do you have to say on this? I am honestly very, very, very scared. That is जो होता है ना when you have like CIs और उससे पहले वाली feeling होती है. अभी मुझे बिल्कुल वो feeling आ रही है like कल CI है and I'm really scared. I mean उसका शोएब मलिक का I fine with Heather Ali honestly. जहाँ पे शोएब मलिक ने आके खेलना है वहाँ पे अगर हैदर अली भी तब तक आए तो it's fine. Rizwan का I need that opener and I am very scared. That is my only feeling right now. Okay, so after hearing that, I'm pretty sure मैं तो आज जाए नमाज पे लेट के नमाज हाजित में नफल अदा करूँगा उनकी बेहतरी के लिए. मुस्तफीज अहमद, it's Pakistan versus Australia. Fun fact, we've never won a World Cup knockout match against Australia, but the Australians aren't that mighty anymore and we aren't that same Pakistan side anymore. So what's your take on tomorrow? You better say something good because तुम्हारी अक्सर चीजें ठीक निकल आती हैं. अक्सर क्या निकल आती हैं? Predictions ठीक निकल आती हैं. जैसे जान के मुझसे prediction तो नहीं है, but like genuinely मेरे ख्याल से इस टूर्नामेंट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा जिंक्स जो है वो टूट चुके हैं. I mean we did beat India, बहुत ज्यादा तो नहीं खैर, we did beat India and New Zealand have reached a T20 World Cup final again. तो मेरे ख्याल से I think the fact we should forget about our past experiences, quote unquote 2010 World Cup semi-final, but that's irrelevant है. लेकिन हाँ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ there's a historical डर that started from the 1999 वाला final as well, जिसमें we were the clear favorites in the tournament apparently, जो हमारे अब्बू वगैरह बताते हैं, और फिर एकदम से न्यूजीलैंड ने हमें फाइनल में चेपा था पूरा. ठीक है, और वो बड़ा डर एग्जिस्ट करता है कि ऑस्ट्रेलिया की एक टीम है, हम टूर्नामेंट में बेहतरीन टीम भी होंगे, तो इफ इट्स ऑस्ट्रेलिया एनीथिंग कैन हैपन. नंबर 2, आई थिंक obviously Australia aren't that mighty, but recently they have found some form. Warner has found some form. उनका बॉलिंग अटैक थोड़ा बेहतर हो रहा है और वो सारी चीजें, एंड एडेड टू द फैक्ट कि रिजवान माइट नॉट प्ले कल, और रिजवान की इंपॉर्टेंस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू हिज बैटिंग एंड कीपिंग, उसका जो ओवरऑल एक लीडरशिप स्टाइल है व्हिच कॉम्प्लीमेंट्स बाबर्स कैप्टेंसी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मेरे ख्याल आई मीन जब हमारे स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे होते हैं, इट्स most of all it's Rizwan who's keeping them in line and making sure they don't lose their nerves वगैरह. As much as I respect Sarfaraz, I love him, but he can get into his own bowler's head at times when he's keeping. तो एक वो जो रिजवान का added element है of leadership, वो हम कल मिस कर सकते हैं. But apart from that, I think एक चीज मैं जो ये वाली बात करना चाह रही हूँ, क्लैरिफाई करना चाहूँ. In Chris Jordan's over, Chris Jordan is the most experienced, one of the most experienced death bowlers in the world right now. Usme bhi the way that Morgan and Butler and specifically Butler handled that situation, I think वो बहुत off थी. The way that he was visibly agitated with everything that was happening, that gets to your bowler's head. और वो eventually जो हुआ था, and Nisham just went after him, or Jordan lost his calm. So the point being कि you need your leaders
to do well, and Rizwan is a proper leader. और अगर वो miss होता है तो फिर मुझे proper डर लग रहा है. Asha, so that's pretty much rounded up most of the things. लेकिन one thing I wanted to point out as well, ये जब बात करना बट्टे वाली, तो commentator ने भी notice की थी और special replay में दिखाया था कि वो किस तरह बॉल फेंक रहे हैं. And एक और चीज जो फर्क आती है ना न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की, आई मीन वो बटलर वाला कैच अगर आप देखो उसको सॉरी बेस्टो वाला कैच उसको साफ पता था कि लग गई, एंड इनिशियल रिएक्शन वाज वो जाकर एडवर्टाइजिंग बोर्ड पे लगा, वो आराम से बैठा हुआ. जब उसने देखा सारे नोट्स आउट आउट कह के खुश हो रहे हैं, वो भी फौरन खड़ा हो गया कि हाँ आउट हो गया आउट हो गया, which was quite silly. I think टेक्नोलॉजी होती है, you can't lie. Reminds me of Ricky Ponting in 2000 जो इंडिया में वर्ल्ड कप था, I think 11. He caught Yuvraj Singh and it's not obvious not out, but he's like, I don't know, check karo. It's 2021. Technology is like literally over everyone. आपको फौरन पता चलता है. So that's quite petty. और फिर वो Darren Mitchell में, if I'm not wrong, my little brother told me कि वो he got in the way of the bowler, and he didn't take a single. That's he didn't take a single. And it's the World Cup semi-final. I mean, I'm not sure if it matters much, लेकिन ये qualities ना आपको आगे जाकर किसी ना किसी तरह फॉर्म में आपको रिवॉर्ड डीप करती है. एंड यू नो न्यूजीलैंड won today, so that's quite good. So coming back to Pakistan versus Australia, Umar, if you take a look at Australia's bowling lineup, I mean they're the same balls across Test, ODI, T20. ठीक है, and if you look at Hazelwood, he bowls a consistent line, attacking just about the off stump और उसके साथ घुमाता है. Considering Babar and Rizwan, they're very stable and they do not go for such shots जिससे आपकी ना वो unreasonable danger हो सकती. Do you think we have what it takes to nullify the initial threat, and once we get past them, तो फिर एक Adam Zampa आता है, ठीक है, और साथ I don't know if they're going to play Ashton Agar or they're going to go for Mitchell Marsh. लेकिन do you think that if we survive the initial overs जहाँ पे swing हो रही हो, तो उसके बाद it's going to be easy peasy for Pakistan? देखें, मैं अगर as a Pakistani, तो obviously हम and the momentum that we have, we think yes, we do have what it takes to beat any team in the world, to beat Australia in the subcontinent conditions. Obviously पाकिस्तान थोड़ा edge है पाकिस्तान को इस मैच में, but जो आपने सबसे पहले तो रिजवान और बाबर वाली बात की, सबसे पहले coming to Rizwan, very important for Rizwan to play this game. We all hope and pray कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर करे और ये गेम खेले. जिस तरह मुस्तफीज ने कहा कि it's not only about his batting but also his keeping, which has been outstanding. मेरा ख्याल है इस वर्ल्ड कप का बेस्ट कीपर रहा है वो. आपने उसके टेक्स देखे होंगे, बहुत ट्रिकी पिचेस के ऊपर बहुत जबरदस्त उसने बॉल कलेक्शन किया, और उसका लीडरशिप का रोल भी मुस्तफीज ने बता दिया कि जिस तरह वो कैप्टन करता रहा है. आपको पता है कि पाकिस्तानी ए को भी कैप्टन करता रहा है, अपनी रीजनल टीम को भी कैप्टन करता है, तो वो उसका एक वो एक्सपीरियंस भी, और विकेट कीपर बिकॉज विकेट कीपर बॉलर को कॉन्स्टेंटली बताता है और वो उसका कॉन्फिडेंस के ऊपर लेके जाता है, खत्म करता है, तो रिजवान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. उसके बाद शुएब मलिक, जहाँ तक शुएब मलिक का ताल्लुक है, तो शुएब मलिक हिमसेल्फ बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है. मैंने लास्ट टाइम भी शुएब मलिक के बारे में कहा था कि शुएब मलिक का रोल बैटिंग से आगे भी जाता है. एक तो वो फिनिश कर रहा है पाकिस्तान को, आपको पता है हमारे पास फिनिशर्स बहुत कम है. आसिफ अली, शुएब मलिक, दो फिनिशर वीक आपके लिए काफी नहीं होते, दो बल्कि जरूरी हैं. एक तो बिल्कुल काफी नहीं होता, तो दो मिनिमम होने चाहिए, क्योंकि फिनिशर रोल ही इस तरह का है कि आपने आके हिट मारनी है एंड इट कैन गो इधर वे, तो या लग सकती है आप आउट हो सकते हो. उसके बाद जो आपने ये कहा कि अगर इनिशियल थ्रेट हम गुजार लें हेजलवुड का, तो क्या होता है, आपने देखा होगा कि हेजलवुड का थ्रेट जो है ना टूर्नामेंट के अंदर ज्यादातर टीम्स ने गुजार लिया है इनिशियली, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जैम्पा जो है उसने बहुत कैपिटलाइज किया है ऑन प्रेशर सिचुएशंस, और उसने देखा है कि रन जब रुक रहे हैं तो एडम जैम्पा ने आके अचानक से विकेटें ले ली. तो हमें एडम जैम्पा को बहुत ज़हन में रख के ध्यान से, मुझे लगता है कि जो ये फास्ट मीडियम पेसर्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया लाई है इस दफा और पिछले 2-4 साल से जिनके साथ जा रही है, अपार्ट फ्रॉम स्टार्क, सारे जिस तरह के बॉलर्स होते हैं इनके, तो अब इन इस तरह के बॉलर्स पाकिस्तान के लिए कोई रियल थ्रेट पोज नहीं करते अगर हम सिली शॉट्स ना खेलें. कोई आउटस्टैंडिंग कोई बहुत वो बॉल इन कंडीशंस के अंदर नहीं करते, ये स्विंगिंग कंडीशंस के बॉलर हैं. तो लेकिन जहां तक जैम्पा का ताल्लुक है, जैम्पा कैन ट्रबल अस. Yeah, that's very true considering कि इतना स्विंग नहीं मिल रहा except for the first 3 overs. आप आज भी देखा होगा कि क्रिस वोक्स की भी और टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट
फर्स्ट 3 ओवर्स में स्विंग हुआ था, उसके बाद बिल्कुल बैट पे बॉल आया था एंड बोल्ट इन हिज नेक्स्ट ओवर वेंट फॉर आई थिंक 14 ऑड रन्स. सो वो बात लॉजिकल है कि इफ यू जस्ट मैनेज टू टेक आउट वो फर्स्ट 2 ओवर्स आराम से, इतनी भी जल्दी नहीं होती T20 में. एंड पर्सनली आई थिंक मिचेल स्टार्क इज द मोस्ट डेंजरस अमंग्स द 3. हम हेजलवुड और कमिंस को खेल लेंगे रिलेटिवली, लेकिन स्टार्क का है. लेकिन कंसिडरिंग कि हम शाहीन के साथ अक्सर नेट्स में लगे रहते हैं, I personally feel Shaheen and Stark are similar, except for the fact that Stark is a bit more aggressive और उसका Yorker अभी भी ज़्यादा dangerous होते हैं. So Zohan, my next questions are to you. Considering कि उनका bowling lineup इतना, what do you think would be the ideal score against Australia, and do you think that their batting lineup is as dangerous as we perceive it to be? Because personally, I think they have been exposed at times. Okay, and if we just get past David Warner and Aaron Finch, I think they could be in big trouble. What's your take on this? I think Australia की जो अभी current team है ना, it like वो बस एक सारे all rounder खिला रहे हैं, and I don't know if like I don't know if that's a good thing or a bad thing, because it can go either way. But yeah, I agree. I'm not. I was talking to a friend with BF, but I'm not scared of him. I am honestly only scared of David. And honestly with Aaron Finch, we know that he struggles against Imad Wasim. तो हमारा एक opening bowler है वो उसको attack कर ले. And I know Steve Smith doesn't play pace that well. जितना उसको hype किया हुआ, he is just okay in my opinion. तो Shaheen उसको attack कर ले. I think we can like manage that way. I'm not too scared of their ball. I'm not too scared of their batting. I am scared of their bowling because हमारी बैटिंग प्रेशर में आ जाती है, स्पेशली इफ रिजवान इज नॉट प्लेइंग. तो there's something to think about there. I'm not honestly like हमारी bowling is fine. Their batting lineup doesn't scare me. It's their bowling. I think that pretty much sums it up. I mean उन्होंने इतने all-rounders खिलाए हैं. When I look at their lineup, it's like मैं सोचता हूँ कि इसको bowling नहीं आती है. मैं बिग बैश याद करता हूँ, and for some reason I can remember everyone bowling. I mean Marcus Stoinis को भी एक दफा गुस्सा चढ़ा था, and I saw him bowling at 145k, and I'm like यार ये तो medium पेसर होता था, ये कहाँ से 145 पे पहुंच गया. Like anyways, Mustafiz, would you prefer Pakistan batting first tomorrow or bowling first? Yeah, historically तो इस tournament में chasing has helped us and most teams. So I think we should bowl first and allow them to give us a total. Considering, especially if we still have Malik playing tomorrow, because chase करते हुए finish करते हुए we'd have Asif and Malik as finishers. So genuinely I would prefer कि हम पहले ball करें, और that should be it. I couldn't help noticing how Omar is trolling Indians by drinking tea all the time. ठीक है, in every episode. Omar, is your tea fantastic वैसे? Okay. Tea is fantastic. Okay, so after sipping your fantastic tea, my next question for you is, do you think our fast bowling is going to be more of a threat tomorrow? Yeah, it's going to be the trio of Hafiz, Shadab, and Imad Wasim that's going to be decisive. I mean, Hafiz तो लेफ्ट हैंडर को ऐसे देखकर वो बॉलिंग कराता है जैसे पता नहीं मैं हर बंदे को उड़ा सकता हूँ. वो जिस तरह जोहान ने मेंशन किया ना, हफीज के खिलाफ नीशा में एक बॉल नहीं. I'm noticing how उसने underestimate किया. हफीज against left hander is like a wicket there already. ठीक है, तो लेफ्टी को देखते और हफीज आ रहा है, समझो वैसी विकेट गिर गई है. So उमर, आपका क्या ख्याल है, कल स्पिन डिपार्टमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फास्ट डिपार्टमेंट? यार इसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये होगी कि हम पहले बॉल करें या पहले बैट करें. अगर तो ऑस्ट्रेलिया चेज कर रहा होगा तो फिर हम बहुत जल्दी अपने स्पिनर्स के ऊपर वापस जाएंगे और उनके ऊपर रिलाई करेंगे, इज व्हाट आई फील. लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया टारगेट सेट कर रहा होगा हमारे लिए तो आई थिंक फास्ट बॉलर्स हमारे गुड इनफ होंगे और वो हम काफी हमें वो कर सकेंगे. अब इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि कल टीम खेलती पाकिस्तान की कौन सी है. बिकॉज आपको याद होगा कि बाबर आजम ने बहुत पहले बता दिया था, 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस दिन पहले जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसने कहा था कि हसन अली जो एक बंदा जो वीक लिंक लग रहा था, उसने कहा उसको भी चेंज करने का कोई चांस नहीं है, आई एम गोइंग विद द सेम टीम. और ये बहुत कॉन्फिडेंस देता है आपके सारे बॉयज को. अब अनफॉर्चुनेटली न्यूज आ रही है कि
रिजवान और शोएब मलिक को शायद फ्लू हो गया, तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। होप वो जल्दी जल्दी रिकवर करने कोई पैनाडोल वगैरह खाएं, कोई देसी टोटके इस्तेमाल करें ताकि जल्दी रिकवर करें। अब इसके अंदर एक और ज़रूरी चीज़ जो है वो, अब मैं आपको एक सीक्रेट बताने लगा। अब ये सीक्रेट आपने गौर से सुनना है। अब ये देखें कि हफीज अब अपने करियर के है लास्ट स्टेज पे, ठीक है। I wouldn't bank on that. उसने रिटायरमेंट अनाउंस नहीं की, उसने कहा आई एम टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम बांग्लादेश टूर। ही हैजंट सेड कि वो रिटायर हो रहा है। ठीक है, मैंने कहा लास्ट स्टेज पे, मैंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल ही आखिरी टूर्नामेंट पे, लास्ट स्टेज पे। अब इसके अंदर अगर वो लेफ्ट हैंडर्स को कोई अगर अच्छी बॉलिंग कराना चाहे, हफीज समझ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि जो वो थोड़ा सा खींचता है, तो अगर वो करना चाहे तो अभी दिस इज नॉट अ बैड टाइम। एक वर्ल्ड कप जीतने के लिए आप ये कर सकते हैं, और खैर है, उसके बाद जो मर्जी होता रहे तो वो देखा जाएगा। लेकिन अगर हफीज स्ट्रेटेजिकली ये सोचे कि यार मैं अब करियर के आखिरी उसके अंदर हूँ, मराइल के अंदर, देखिए नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप खेलने के लिए हफीज को आप बीच में पीएसएल आता है, पीएसएल में फिर परफॉर्म करना पड़ेगा, इसलिए शायद ये आखिरी वर्ल्ड कप ही हो। तो देख ले, मैं क्योंकि एज फार एज ऑस्ट्रेलिया इज कंसर्न, उनके पास बैटिंग के अंदर 2-3 मैच विनर्स हैं, जैसे एरन फिंच है, डेविड वार्नर है और मैक्सवेल है। ये एब्सोल्यूट मैच विनर्स हैं, ये 20-30 बॉलें खेल जाएं तो गेम चेंज कर देते हैं। तो इस तरह के बॉलर्स को आउट करने के लिए अगर आपको थोड़े से इस तरह की टैक्टिक्स यूज करने पड़े तो वो भी हो सकता है। तो उमर इज सटली हिंटिंग के मैं हफीज से एक और दफा मिल सकता हूँ लम्स के किसी कैंपस की जगह पे, तो मैं मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप के बाद हर रोज जाया करूंगा। लेकिन आई गेट व्हाट यू आर सेइंग एंड आई होप आईसीसी इज नॉट वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है, बट लेकिन आई एग्री विद यू हफीज भाई, अगर आप ये देख रहे हैं तो आप समझ जाए हम आपके साथ हैं। बेशक वो जो मर्जी कहें, हम आपके फॉलोअर्स हैं, फैन। आपको तो मेरा पता ही होगा अब तक, लेकिन खैर। अच्छा, जोहा प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। बाय द वे मैं हफीज से 2 दफा मिला था कैंपस में, दोनों दफा मैंने चीख बहुत ऊंची मार दी थी एंड हफीज वाज लाइक, और कोई स्कोर मिल नहीं रहा था और मुझे बहुत सैड फील हुआ कि मैं चीख मार के मिल रहा हूँ और कोई और बंदा मिल नहीं रहा उससे, ठीक है। सो दैट वाज लाइक माय मिनी रैंट टाइप ऑफ थिंग। अच्छा जोहा, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। कल कितना टारगेट होगा, कौन बेस्ट बैट्समैन होगा, बॉलर कौन अच्छा होगा, और पाकिस्तान की खुशी में हम गुलाब जामुन खाएंगे या नहीं? I think हम खाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। I'm really hoping, मैं hopeful हूँ, थोड़ी डरी हुई हूँ but hopeful हूँ। I think we should be chasing. So if we chase, so we're definitely winning. I am using the word definitely very optimistically, but I'm doing it. Or I think Fakhar Zaman, or like someone in the middle order, because Fakhar Zaman hasn't played and he does so in big matches usually. So, but Babar I'm always counting on. So Babar or Fakhar, and in the bowlers I think Shaheen also, because usko abhi itni wickets nahi mili, so I think he is now getting restless, और usko hai ki thoda sa mujhe bhi, like I need the limelight too. So yeah, it's also Imad Wasim, I am Imad Wasim has been consistently performing throughout the tournament. I mean, वो ponytail जितनी accurate बनाकर आता है उतनी accurate उसकी bowling होती है, मतलब 100% on target all the time, ठीक है। Now we move on to Mustafiz Ahmed. Mustafiz, if you get all your bets ठीक ना, so after World Cup हम अपना एक मुस्तफीज का आस्थाना खोल देंगे, वहां पर हम लोगों से तुम्हारी predictions करा कर ना पैसे कमाएंगे, ठीक है। क्रिकेट ग्राउंड में एक पोस्टर लगेगा मुस्तफीज के नाम का। कमाई होगी। So मुस्तफीज, अच्छा, सवाल क्या था? मैं इतनी तारीफ में अपना सवाल, तो मैं सवाल भूल गया। अच्छा, so सवाल में ये था कल कितना टारगेट होगा, कितने रन होंगे, कौन बेस्ट बॉलर होगा, बेस्ट बैट्समैन इज पाकिस्तान विनिंग, ये था यार। अभी ना मैं सुबह सोचा था कि ना नीशम और मिचेल मेरे ज़हन में नहीं आया था। मैं सोचा था नीशम और कॉनवे हैवंट परफॉर्म्ड इन द टूर्नामेंट सो फार उस तरह, तो मैं सोचा था इन दोनों की इनिंग्स रहती है। और अब मैं सोचा था कि फ़खर, जैसा कि ज़ुहा ने कहा, एंड हसन अली हैवंट बीन डूइंग देयर बेस्ट, तो आई वुड से कि इनकी बारी है, फ़खर एंड हसन
to surprises, inshallah. Yeah, at by जैसे कि शायद हमने बात कर ली है, I think 160 if we bat 160 should be more than enough to win the game if we bat first, but enough की बात है, we can defend 145 versus Australia, I believe. ठीक है, but obviously अगर हम सही खेलें, if we chase, I would not prefer anything above 150, because knowing us and knowing how we cater to chases, 150 से ऊपर would get a bit too pressurizing for us. और I believe कि अगर Australia bat first कर रहे हैं तो we are good enough to restrict them below 150 दुबई के grounds में. But that's so उनकी तरफ से I would be a bit scared of जैसा कि उमर ने कहा Zampa से, we have to play Zampa well, और उनके दोनों openers are I think devastating, उन दोनों का ख्याल रखना पड़ेगा. अच्छा, so I would beg to differ on the 160 target, क्योंकि we saw that against West Indies as well. They're too strong for 160. I mean, West Indies bowling attack isn't that good as well, but Australia in the semi-finals is like they turn into the beast mode. So Umar, your prediction, then mine, and then we're gonna wrap it up for today. अच्छा, सबसे पहले तो बिफोर गिविंग माय प्रेडिक्शन मैं सबसे पहले कहूँगा कि इस दफा जो प्रेडिक्शन है उसको आप एज ए प्रेडिक्शन लें. आप पता नहीं क्या समझते हैं कि प्रेडिक्शन 100% एक्यूरेट होनी चाहिए, और दुनिया के सारे ग्रेट्स लेजेंड क्रिकेटिंग लेजेंड्स ने कहा था कि इंग्लैंड फाइनल में जाएगा, तो उन बेचारों की बात सुनते हुए मैंने भी कह दिया. उसके बाद आपने 10 मिनट बैश किया मुझे, तो आप थोड़ा सा ना इसको एज ए प्रेडिक्शन लें. अब मुझे क्या लगता है कि इंशाल्लाह कल पाकिस्तान जीत रहा है. अब उसके अंदर प्लेयर्स टू वॉच आउट, मैं I'd again go with my spin attack. I think इमाद वसीम, शादाब खान बहुत इम्पोर्टेंट, और बैटिंग में मुझे लग रहा है कि प्रोफेसर का काम चलने लगा है, और हफीज भाई जो हैं वो फाइनली अब एक बड़ी इनिंग्स खेलने के लिए आ रहे हैं. तो होपफुली कल पाकिस्तान जीत रहा है, और अगर हम चेज करते हैं तो ही बेहतर रहेगा. बैट फर्स्ट करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, पाकिस्तानी थोड़े इन डाउट आ जाते हैं, और आई रियली होप कि रिजवान और मलिक कल के मैच के लिए फिट हुए और वो खेलें, क्योंकि उनके ऊपर हम बहुत डिपेंडेंट. Okay, so that's your prediction. And आपने कहा कि सारे दुनिया के ग्रेट स्पेशलिस्ट जो थे क्रिकेट के वही कहते. I mean, उमर, आपकी ना ओरिजिनल सोच होनी चाहिए. You shouldn't copy what people actually think, और थोड़ा सा ना अपना ओरिजिनल दिमाग और सोच पे ना बोलते. यही होता है. फिर वो देखो ना, मेन स्ट्रीम आइडियाज अक्सर खराब होते हैं. अपनी सोच हमेशा ओपन रखनी चाहिए. तो फॉर फ्यूचर सेक, I mean, टूर्नामेंट तो खत्म होने वाला है, and if God forbid पाकिस्तान आ जाए तो ये probably my last episode होगी क्रिकेट फ्रेंड्स की. So for future references, उमर अपनी सोच सबसे आगे, लोगों की बात सुनो लेकिन करो अपनी, ठीक है. अच्छा, on that note, my personal prediction is that Pakistan would bat second, and I'm expecting Australia to score around 165 to 175 के around. Their star performer is going to be David Warner. उसके अलावा हमारा बॉलिंग में बेस्ट इमाद वसीम होगा, और पाकिस्तान की तरफ से हम जीतेंगे, और मैं हफीज भाई को बैक कर रहा हूँ एक अच्छी इनिंग्स की. एंड आई पर्सनली फियर के वैसे तो आई विश के रिजवान और मलिक दोनों के, लेकिन एक हमारा ओपनर जल्दी जाएगा. ये माई फियर, दैट्स माई फियर, ठीक है. With that note being done, since this could probably be our last episode, I would like to thank Mustafiz. क्या मतलब probably be our last section? I'd like to interrupt you here. एक तो सबसे पहले जीते हम फाइनल का एनालिसिस कर रहे हैं. तुम लोग कर तो हम रहे जीत रहे हैं. ओ भाई, मैं तो इतना सैड हो जाऊंगा, मैं तो बात ही नहीं करनी किसी से. सबसे पहले मैं आपको मुबारक देना चाहता हूँ कि हम फाइनल में पहुंच चुके हैं. न्यूजीलैंड से हमारा फाइनल है, आप रेडी हो जाएं. मैं आप ऐसे ही आप होप लूज कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ. यार मैं पैनल को थैंक यू नहीं कर दूंगा इन केस अगर वो आप नहीं आप छोड़ें, आप एनालिसिस लिखें कि भाई न्यूजीलैंड के अगेंस्ट क्या स्ट्रेटजी अपनानी है. मिचेल आ गया, अब कोई नया एक बॉय आया है डाउन, बहुत ही
डिप्लोमेटिक जवाब से पहले आपने प्रेडिक्शन पाकिस्तान की दी है और बाद में ये भी कह दिया है ताकि हम आपको ना कहें कि आपकी गलत ये बिल्कुल सही बात है। हर एपिसोड के अंदर फाइज की प्रेडिक्शन इसी तरह होती है कि भाई बस जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। कल मैंने इतनी प्रेडिक्शन दी, मुझे मेरे एक दोस्त ने वापस मैसेज किया, ब्रो ये आप इंग्लैंड को डिस्क्राइब कर रहे थे, किसी और को डिस्क्राइब कर, जिस तरह आपने बोला सेकंड चांस मिलना नहीं चाहिए, टॉक्सिक है, वो घटिया है, तो मैं कोई सेकंड डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देता। नहीं आप बिल्कुल तैयारी करें आप फाइनल के लिए, और फाइनल में हमें आपके से ना प्रोफेशनल एटीट्यूड के होप कर रहे हैं। ये आप फजूल इस तरह आपका जिस तरह का ये आपका है ना कि आगे पहले बैशिंग शुरू कर देते हैं पैनलिस्ट की, एक तो हमें पैसे मिल नहीं रहे ये करने के, फिर आप साथ बैशिंग शुरू कर देते हैं। तो फाइनल में आपने बिल्कुल तैयारी करके आना है कि किस तरह के प्रोफेशनल सवाल आपने पूछने हैं, और फाइनल फिर हम आपको बताएंगे कि हम न्यूजीलैंड को किस तरह हरा। अच्छा, वैसे एक बात है, वो बैशिंग करना मेरा फर्ज है, क्योंकि ऑलरेडी आपने बैशिंग करते करते हमारा 8 के पैनल को एंड में 4 पे तब्दील कर दिए। तो ये तो होना था, ये ना फिर एंड में और तुम फाइनल के अकेले बैठे बातें कर, तो ये तो बनना था। अच्छा, विद दैट बीइंग सेड, वी सुपर ऑप्टिमिस्टिक हो कल इस एपिसोड में मुस्तफीज की इतनी तारीफ की है, अब तो पक्का आएगा मुस्तफीज की। तो बेचारा सब बड़े प्यार से ऐसे कहे कि चुप कर जाता। ठीक है, विद दैट बीइंग सेड, अच्छा, और जोहा का कल का एनालिसिस बिल्कुल ठीक है। वैसे ये आपने अप्रिशिएट नहीं करते आपके कल का, मैंने बोला था बैटिंग सेकंड तो न्यूजीलैंड जीत जाएगा। अच्छा, अभी मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं दोनों के साथ दुश्मनी पाल लूं, या मैं एक को खुश करके दूसरे के साथ अभी बिटर नोट रख लूं। जोहा, कंग्रेचुलेशंस, आपका अक्सर एनालिसिस ठीक रहा था, लेकिन एपिसोड के एंड में यही मैं कहना चाहता हूँ, उमर इज अ थर्ड क्लास क्रिकेट एनालिस्ट, और ये दूसरों की जो प्रेडिक्शंस कॉपी कर आके सोते हैं। मैं ये इस तरह के लोग शेन वॉर्न को देखकर आकर ना फिर बाद में बताते हैं कि ये होगा। ठीक है, विद दैट बीइंग सेड, आज आप लोग रात को जानमाज बैठे, इशा पढ़े, उसके बाद हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआ मांगे रिजवान और मलिक ठीक हो जाए और इंशाल्लाह पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाए, आमीन। So with that being said, Allah Hafiz everyone.